Regulation Act 1950 and Royal Act 1990 raised political and social among Indians. Freedom fighter generally show disgracement for Rowlatt Act. What was the Rowlatt Act? The British colonial government passed the Rowlatt Act, which gave power to the police to arrest anyone any reason. The purpose of the act to control the nationalist reason and country. Mahatma Gandhi told that all the people to 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 the satyagraha against the country. On 6 April 1919, Mahatma Gandhi started a non-violent satyagraha against the unjust Rowlatt Act passed by the British government. On 12 April 1919, protest leader Hans Raj held a meeting at Jallianwala Bagh the next day. On 13 April, the British government forced a curfew and then martial law in Jallianwala Bagh. Marshal suspended the communication and also prohibited public gathering. By the evening of 13 April, nearly 25,000 people have gathered at Jallianwala Bagh. Colonel Reginald Dear did not try to peacefully disperse the crowd despite be aware of the gathering. On the order of Colonel Dyer, secured all exit and start firing on the escaping protector. Officially estimated put the number of deaths to 379. Will in actual there were nearly 2,000 casualties. Let's see the dramatic presentation of Jallianwala Bagh massacre by Standard 7. वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि इन अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर एक और कानून ला दिया है। पहले वो 1915 का कानून और अब ये रौलट एक्ट। आप सभी को पता ही है कि रौलट एक्ट के तहत अपने दो क्रांतिकारी भाई सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार कर लिया है। हमें अंग्रेज सरकार और इस रौलट एक्ट के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। कल जालियनवाला बाग में मोहम्मद बशीर और हमारे कांग्रेस के प्रिय नेता कन्हैया लाल भाटिया की अध्यक्षता में यह सभा आयोजित की जा रही है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी ठीक 4 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे उपस्थित रहे। लेकिन यह आंदोलन हमें गांधी जी के उसूलों पे चलकर करना है। यह आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्वक होगा। इस रौलट एक्ट का विरोध हमें शांतिपूर्वक तरीके से करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, तुम्हें पता ही है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम उनका जम के विरोध करेंगे। प्लाटून टेक पोजीशन। हम रुकेंगे नहीं जब तक हमें प्लाटून कोई बच ना पाए। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। फायर। गोलियां खत्म हो गई साहब, गोलियां खत्म हो गई साहब। स्टॉप फायरिंग। मार्च। Any moderate Indians to abandon their previous loyalty to the British and became nationalist, distrustful of British rule. Colonel Dyer reported to his superiors that he had been confronted by a revolutionary army. O'Dwyer requested that martial law should be imposed upon Amritsar and other areas. At least 150 people were killed by security forces in the day after Jallianwala Bagh massacre. Was beyond India and the United Kingdom. The incident Jallianwala Bagh
was garnered international attention and contaminational with all leaders from around the world, speaking out against the British imperialism and the actions of Colonel Dyer and with his troops. All over were disgusted by the action of the British. Rabindranath Tagore gave up his knighthood and Gandhi surrendered his Kesar Hind medal. This was a message that they wanted nothing to do with cruel Britisher after the Jallianwala Bagh massacre. मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो। महात्मा गांधी। सत्यमेव जयते। पंडित मदन मोहन मालवीय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इंकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह। जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Freedom fighters made many sacrifices which one cannot be imagined of doing for their loved ones. Leave the country alone. The amount of pain, hardships, and the opposite they endured cannot be put into words. The generation after them will always be indebted to them for their selfless sacrifice and hard work. Vande Mataram. भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।